finally we're back. Monday morning, new week, and yep, this is how we start. Early morning, 4 fucking 30. Okay, gold market, gold just started, and every forex pair you will be able to trade right now. Okay, the reason behind itna jaldi live आने का very important. Most importantly, we have been trading, and we saw a lot of moves in gold. आज फुल्ली गैप अप. ओके, फुल्ली गैप अप. गोल्ड ओपनिंग हुआ है, 5000 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, एंड वो लेवल भी अभी एक बेसिकली दैट वाज लाइक अभी सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा उसको. तुम समझ रहे हो? तो या दिस इज़ द करंट सिचुएशन इन द मार्केट, एंड विल बी एबल टू ट्रेड वेरी मच. ठीक है. सो व्हाट इज़ द कंडीशन राइट नाउ? देखो, लास्ट वाला जो था, दिस वाज द ऑल टाइम हाई. दिस इज़ लाइक ऑल टाइम हाई. तुम समझ रहे हो? इससे ज़्यादा ऑल टाइम हाई नहीं हो सकता, बिकॉज इट वाज वेरी क्लोज टू द 5000 लेवल. एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट अभी ये जो गैप देख रहे हो तुम, राइट, दिस इज़ अ गैप अप. और राइट, कितने बड़े पिप्स का गैप अप है? एक बार तुम एक भी चेक कर लो. 132. इज इट 132? No, it's more than that. How much is it? Okay, crazy. Cool. Nice. Good level. तुम अगर ऊपर से देखोगे एक अच्छा खासा लिक्विडिटी स्वीप तुमको देखने को मिलेगा, बट द ओनली पॉइंट इज़ दैट यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये लिक्विडिटी स्वीप है या नहीं है, जब तक इस लेवल को हम एक अच्छा सपोर्ट की तरह जब तक यूज़ नहीं करते. राइट, ये हाई करंट है, दिस इज करंट हाई दैट विल कंसिडर. what we need right now, we need the liquidity sweep off of this area. Right, we need some sort of एक लिक्विडिटी स्वीप मिले उस एरिया में, ताकि हम अच्छा कुछ ट्रेड प्लान कर पाए. ओके, डेफिनेटली मार्केट विल कम डाउन. It will थोड़ा try to go up, but definitely the overall view is gonna be bearish. Okay, good liquidity sweep, I like that. The only thing is that एक कोई confirmation नहीं हमारे पास, तो हम अभी फिलहाल trade place नहीं कर सकते. Okay, we need to wait for some time, and definitely we'll get something out of this area. You see this 1 minute, see फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, and it might take out this liquidity. And 10 seconds. ओके, अगर तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम की भी बात करोगे तो 5 में हमारे ऑलरेडी 5 सेकंड बचे. सो लेट्स वेट फॉर दैट, लेट्स होप फॉर दैट, एंड देन विल गो फॉर समथिंग. दिस एरिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय द वे. ओके, सो देर इज़ नो लाइक इस एरिया पे गोल्ड कभी आया नहीं है, सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग कि यहाँ पर कहाँ पे सपोर्ट है, किस तरीके से चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट गोल्ड इस लेवल पे कभी भी नहीं आया है. गोल्ड इस लेवल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? Yes. Okay, good rejection. All right, I hope everything is visible. And what do you trade? I trade gold, brother. Singh, thank you so much for joining. Let's start this. This is not the first time I'm first time मैं अभी morning में आ रहा हूँ, but like I come daily live in the evening. Okay, afternoon, evenings, but first time this is like a Monday morning, like lot of gap up. Yeah, ट्रेड यहाँ मिलेगा. ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, बस वही ये था. यू सी दैट राइट, इट टुक्स दैट हाई इज स्टिल देयर. ओके, दैट हाई इज स्टिल देयर. ओके, व्हाट इज द मेन थिंग राइट नाउ? ठीक है, अगर तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, दिस इज अ करंट हाई दैट यू विल बी एबल टू सी, and this is a current low. Okay, there is a lot of liquidity pool below this area, there is a lot of liquidity below above this area. Okay, what we need to see, right, is it gonna market take out the first liquidity and then it's gonna come down to the other liquidity pool, right? So what is the major? Okay, first of all, do not focus on this, okay, and this complete bullshit. ठीक है, अगर तुम TPB मार्क कर रहे हो, जो भी मार्क कर रहे हो, this should be your target. दिस शुड बी योर टारगेट. ये सारा एरिया इट्स नथिंग. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? एंड येस, अभी देखिएगा, अभी 1 मिनट में आई फील लाइक यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है. अगर नहीं भी हुआ देन दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. ओके, इट इज़ रिजेक्टिंग, देख रहे हो. सो या ऑल्सो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, आई होप कि तुम लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बिकॉज मैं मॉर्निंग में नहीं आता हूँ लाइव.
Yes, exactly, you saw that. This is a liquidity sweep, okay, a very quick liquidity sweep on 1 minute time frame. And yep, it is bullish, so we are not gonna go for anything. Okay, it is bullish overall. You see that gold is bullish, we are not gonna go for any sort of short. Okay, so yeah, मैं बोल रहा था कि जो जो लोग अभी देख रहे, you guys not might have not seen me, तो सब्सक्राइब कर दो एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन, ताकि तुम लोगों को जब भी मैं लाइव हो तुमको लोगों को पता चले दैट आई एम हियर. ओके, you see that a great liquidity sweep. Okay, if I'm targeting, this is the target that I should be going for, because this is the next liquidity pool that market will target anytime soon. Okay, but at the same time we know that market is gonna travel. वहाँ पर हमको पता है कि उस लेवल पे मार्केट जाएगा, बट किस तरीके से जाएगा, कब जाएगा, इसीलिए सेटअप्स इंपॉर्टेंट होता है, राइट. सो उसके लिए हमें और थोड़ा वेट करना पड़ेगा. डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है अभी. एंड अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, इट इज़ रिजेक्टिंग ऑफ दैट एरिया. एंड या तुम यहाँ से अगर सेल करते हो, डेफिनेटली वी डोंट हैव एनी सेटअप, राइट. अगर बस तुम अगर मार्क करते हो, देन दिस विल बी योर नेक्स्ट टारगेट. ठीक है. The gap up is crazy, by the way. The gap up is crazy, and yes, we are gonna take advantage of that very time soon. Okay, great level. 5 minute looks good. How does it look? Okay, pretty much bearish, bullish. It came down, but like it flipped completely, and the 6 minute is still there. Okay. All right, थोड़ा वेट करता है. Not one candle has gap. ओके, कोई भी अभी जो कैंडल क्रिएट हुई, किसी भी आप क्या कैंडल में अभी तक गैप नहीं है, राइट. अगर तुम गैप की बात करोगे, यहाँ पर भी नहीं है, इस वाली कैंडल में भी नहीं है. We don't have any gaps right now. Okay, so we need to wait for some time. We need some market to create some gaps, and then we can take advantage of that gaps and like use some sort of confirmation as a confirmation. Okay, you also see this is what market is doing right now. This is what gold is doing right now. ठीक है, could be यहाँ पे थोड़ा manipulation होगा, and this could be a fully distribution, and right now it is manipulating, sorry, accumulating at this area. Okay, accumulation, manipulation, distribution, simple. A nice breakout, 1 minute, good breakout. ठीक है, but we're not gonna sell just because the breakout. We're not gonna sell. There is no point of selling from this area. I like at this point. तुम समझ रहे हो, at this point. Definitely good level, but overall if you see that gold is fucking bullish. ठीक है, gold is not stopping. But major liquidity pool, there's this. Okay, it is coming down. Okay, it is gonna come down. So if you sell from here, and we're not selling, ठीक है, अगर हम sell भी करते, we're not selling because कि यहाँ पे breakout हुआ है. You need to understand this. This is a high that market has created. Market has swept that high. Okay, this is liquidity sweep. Market has swept that high. Okay, and then you can think that okay, this is the next liquidity pool that market can travel to, and that is how you can sell from this area, but not at this point. तुम ये मार्क करके रख सकते हो, बट अभी सेल नहीं कर सकते तुम, बिकॉज यू डोंट हैव एनी कन्फर्मेशंस. ओके, so yeah, but very good area to sell from. If you want to take a risk, you can go for it. Yep, it's going down. You see that? बट यही होता है कि हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे. 99% it can directly travel to this, समझ रहे हो, बट वही होता है, then it might do this also. This is like a good invitation to the sellers. Okay, very good invitations, but it can go like this also. That's why you see that rejection on 1 minute time frame. That's crazy. How does it look on 5 minute? ठीक है, still coming down, no stress.
Also, this is not how the setup looks. Setup is different, but like अभी morning में I just like इतने मुझे कैमरा वैमरा नहीं लगाना था, that's why I just came directly. देखो गिरा गिरा राइट. गुड गैप, गैप अच्छा है, ठीक है, यही चाहिए था. वी नीडेड दैट गैप, ठीक है. अगर मार्केट उस गैप को इन्वर्स करता है देन दैट इज़ नॉट अ गुड प्रोबेबिलिटी जहाँ पर तुम सेल करोगे, ठीक है. दिस गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट. डू वी हैव एनी गैप ऑन 5 मिनट? वी डोंट, ठीक है. Is it gonna go and just tap into that fair value gap and it's gonna bounce from that area? ठीक है, it already tapped into that fair value gap. अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, it did tap into that fair value gap. This is the level, okay, it did. So this is your confirmation that you should sell from this area. But वही होता है कि until unless is it not gonna like fully get into that. And कितने seconds बचे? Good, you saw that tapped into that fair value gap and directly came down. Okay, it's gonna come down definitely. But यहाँ पर एक support भी है, so you need to like make sure that okay, it wants to come down. It definitely wants to come down. I told you जो मैंने mark किया था, it was so accurate. Okay. But yeah, next level तुम्हारा target यही होना चाहिए, ये वाला high. Sorry, ये वाला low. You're getting my point? यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश तो करेगा बट डायरेक्टली नहीं जाएगा, समझ रहे हो. बिकॉज यहाँ से ऊपर जाने में कोई मतलब नहीं है, ये कुछ नहीं है. दिस इज़ नथिंग. बाय द वे ट्रेड लिया नहीं है हमने, ठीक है, मैं बस मार्क कर रहा हूँ. वी हैवंट टुक दिस ट्रेड, मैं बस तुमको प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ एट दिस पॉइंट. सो या दिस इज जस्ट लाइक मी टेलिंग यू द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट कैन हैपन. एंड देन जैसे ही मुझे कोई सेटअप मिलता है डेफिनेटली आई विल टेल यू कि हाँ चलो ठीक है मैं ऐसे सेल कर रहा हूँ, देन यू गाइज कैन डू द सेम. बट राइट नाउ we don't have that. No, we don't. This is like another liquidity sweep off of this area. And is it gonna like retest? No. How many minutes? 1 minute, right? Yeah, again good liquidity sweep. You see that 5 minute ka fair value gap, it's very important. So now what we need to see, okay, 5-minute time frame pe what you need to see. On 5-minute time frame there is another FUG at the same area, right? What we need, that market wants to like tap into that fair value gap and it's gonna bounce off of that area. Yes, it is gonna do that. It's gonna do that. You see that? देख रहे हो? So yeah. ठीक है. देखो जो गैप था 1 मिनट का उसको कम्प्लीटली इन्वर्स कर दिया है, तुम समझ रहे हो. अगर यहाँ से रिजेक्शन अगर मिलता है हमें ये वाली कैंडल से, सो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इज़ गोना गो डाउन फ्रॉम दिस एरिया, राइट. बट यहाँ से अगर इन्वर्स नहीं मिलता है देन इज गोना ट्रेड मोर इनटू इट एंड देन दिस इज योर नेक्स्ट थिंग, दिस इज योर नेक्स्ट टारगेट, ठीक है. इट्स नॉट गोना इन्वर्स फ्रॉम दैट एरिया, समझ रहे हो. इट्स वेरी बेसिक and
वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, किसी को भी यहाँ इतना समझ में आ जाएगा कि यहाँ से अभी ऊपर जाएगा। अगर तुम क्विकली अगर स्कैल्प लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो इस लेवल पे, यहाँ पे इतना, इस लेवल पे बड़े बहुत छोटा होगा ये एरिया, बहुत छोटा होगा, समझ रहे हो, ये एरिया बहुत छोटा होगा, ये वाला है। ये वाला हाई हटा देता हूँ, ये वाला कुछ काम का नहीं है। द ओनली हाइज आई नीड दैट कि उसमें कुछ अच्छा खासा ट्रेड किया होगा। यू सी दैट, दैट्स व्हाट हैपेंस राइट। ब्रोक दिस ट्रेंड लाइन, केम डाउन, ये वाला दिया राइट, ये मूवमेंट जो कि कुछ भी नहीं था, दिस इज लॉजिकली नथिंग राइट, exactly reverse from that area, and now it is planning to go up and it has invalidated that basically inverse यहाँ पे फेयर वैली गैप को इसने ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, so it's going up right now and it did come to this point जहाँ पे exactly ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी right, you see that। इसको मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, ये अभी के लिए कुछ काम का नहीं है। यू सी दैट इन्वर्स कर दिया है 5 मिनट के फेयर वैली, 5 मिनट फेयर वैली आपको। सो यहाँ से तो सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। द ओनली थिंग इज़ दैट वी नीड मार्केट टू टेक आउट दिस हाई राइट, वन ऑफ द मेन हाई जिसको लेकर हम बाद में सोच सकते हैं दैट इज़ गोना गो डाउन फ्रॉम दैट एरिया राइट। राइट नाउ ऑल्सो यू सी दैट ये देयर इज़ अनदर फेयर वैली गैप इन दिस एरिया राइट। इज इट गोना टैप इनटू दिस फेयर वैली गैप, अगर इसको टैप इन करके फिर से ऊपर जाता है देन विल बी एबल टू सी सम गुड मूवमेंट। ओके देखो, द बॉडी इज़ नॉट गोना क्लोज बिलो दिस एरिया ओके, अगर नीचे क्लोज होता है देन दिस इज योर टारगेट, अगर ऊपर क्लोज होता है देन दिस इज योर टारगेट, सिंपल एज दैट, नो रॉकेट साइंस। ओके, इट डिड इनवैलिडेट दैट फेयर वैली गैप, तुम समझ रहे हो, इट डिड इनवैलिडेट दैट फेयर वैली गैप। सो 30 सेकेंड में अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होता है देन देखो इट वेंट अप, यू सी दैट मेजर स्वीप, 23 सेकेंड्स लेफ्ट फॉर दिस वन, होल्ड करो बस अभी। You see that inversion, okay, no it's giving, it's too much okay, बहुत ज़्यादा ही like flip हो रहा है कैंडल, so we cannot say anything अभी तक। बस इतना ध्यान में रखना कि यहाँ पे एक 5 मिनट का 1 मिनट का फेयर वैली गैप है, that's it, nothing else। let me see what is happening on 5 minutes। not much। ये होगा अभी, वेट करो। ठीक है, यहाँ से थोड़े क्वांटिटी के साथ सेल कर सकते हो, बहुत छोटा स्कैल्प होगा, बट ध्यान में रखना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, बहुत छोटा स्कैल्प होगा, ठीक है। $88 already in 100, this is my right, exactly, you see that 130, boom, reversed right, from which area it did reverse, am I gonna consider this no,
ठीक है, क्रेजी एस रिवर्सल यहाँ पर तुमको देखने को मिल रहा है अभी फ़िलहाल, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट दिस कैंडल हैज़ लाइक 2 minutes लेफ्ट. ओके, 2 minutes left for this one. It was a very rush entry, but at the same point you need to look at market and observe कि हाँ अभी इस point पे क्या हो सकता है, and this is the probability that I'm able to see right now. Okay, it's 1:2 or 1:1.5 or something like that. Okay, what we need right now, we need reversal off of this area. That's it. It tapped into the order block after making CISD. What do you think? It did tap into that. The only thing is that I do not consider order block that much. I do not give priority to the order blocks. The only thing I majorly focus on is like highs and lows and fair value gaps and like this and that and like there are many things. There are many concepts, but order block is something that I do not prefer like very much. You know what I mean? देखो अगर इसको ये क्रॉस कर देता है then there is no point of holding this trade, but like there is high possibility that it is gonna come down from this area. Okay, from this area, you see that, this area, that's it, nothing else. It's just a reversal off of that area, so we're not gonna like think much about it. You're getting my point? So yeah, if you want some good profit, you need to have some sort of good like SL also. ठीक है, SL is very important इस केस में एंड डेफिनेटली अगर इसको भी अगर ये ब्रेकआउट अगर ये एस एल लेता है दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन बिकॉज आई नो दैट लाइक इफ इट वांट्स टू गो डाउन this is the next target that is it should be coming to this area. You're getting my point? It did take the SL, right? But I'm gonna hold it. I'm gonna hold it. I'm gonna hold it. I'm gonna hold it. No stress. Nice. Okay. Good. You see this another FEG at this area. Okay. There is no bottom wick to this candle. Okay, there is no bottom wick to this candle, so remember this candle. Does it have a bottom wick? Yeah, it does have, actually it does have bottom wick. Another liquidity sweep, great, but like how many times it's gonna like take this liquidity, dude? Okay, a good FEG. Okay, good FEG level. The only thing is that is it gonna like invalidate that, inverse that FEG, or is it gonna like directly break through that FEG? Okay, it tapped into that FEG. तुम समझ रहे हो? अगर टैप इन करता है then we are out. टैप इन करता है then we are out. Okay, the ball is getting inside that FEG. Good. How does it look on this? Right. Last के 3 minutes of the 15-minute candle, the 4 minute, and definitely it is rejecting off of this area, creating this long buy side liquidity. That's it. It did sweep in. Okay. As I told you, right? It's gonna go to that level and then it's gonna come back and it's gonna fall now. That's why I was holding. Why I was holding? That's why I was holding. That's it. Nothing else. For nothing else. We just want this candle to come to this area. That's it. Then we're relaxed. It should not reverse from this area. Good movement. Love that. You see that? What I'm worried about, this high, this is my target, right?
This is my TP. This is my TP. Because it does sound like कि oh अच्छा ठीक है ये वाला भी low है, ये वाला भी low है, ये वाला भी low है, but this all lows are like bullshit, like literally bullshit. Okay. Does not look good on a 5 minute gap. If it's gonna inverse just tap into that gap, then it's not a good look for the sell. Okay, for not short. Okay, not a good look for a short. A good sweep. Good sweep. Yep, good, not a good look. We need this gap to be filled out very soon. Okay, good reversal. Okay, 25 minute is still pending, then it might correct that reversal. Okay, if the 25-minute second, yeah, exactly as I told you, it might correct that. That's it. It might just fucking correct that. That's what market does all the time. What time is it? Like 5:13, right? Okay, the movement is supposed to come. Wait for it. Wait for it. Don't panic. Okay. Good level. Okay. Good. We need this right now. We need this very soon. Very soon. You see that? One more thing that you need to focus on, right? On 1 minute, what does it say? On 1 minute time frame, this is the level. Okay. सो ये वाला कैंडल पूरा ही तरीके से रिवर्स होना चाहिए, ये वाला कैंडल पूरा ही तरीके से नीचे आना चाहिए, तब जाके ये तुरंत इस लेवल पे आएगा. आप समझ रहे हो? ये वाला पूरा ही फ्लिप होना चाहिए कैंडल. ये जो फेयर वैल्यू गैप ये जो है 1 मिनट का, इसको पूरा ही नीचे बॉडी क्लोज होना चाहिए, एक से ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए बॉडी. दैट्स ओनली थिंग. आ गया नीचे, पूरा आ गया. अब देखो कैसे नीचे गिरेगा. जस्ट वेट एंड वॉच. ठीक है, आ गया नीचे, वही चाहिए था. एग्जैक्टली. Let's fucking go. Let's fucking go. बहन छोड़. समझ रहे हो? ऐसी होती ट्रेडिंग. ये क्या कर रहा है फिर से भाई? It has to come down. तुम समझ रहे हो? It does not make sense going up. It has to come down. It's just like inviting the sellers right now. Sorry, buyers right now. That's it. 30 seconds remaining for this one. ये भी थोड़ा रिवर्स होना चाहिए. अगर ऊपर जाता है, नॉट अ गुड लुक. अनदर थिंग, बिकॉज देन वो 1 मिनट को पूरा ही ज़्यादा ये कर देगा, वो इन्वर्स कर देगा, एंड दैट्स नॉट अ गुड लुक. बिकॉज अगर इन्वर्स करता है, देन देर इज़ नो वे दैट इट इज़ गिविंग अस अ सिग्नल दैट ओके मार्केट वांट्स टू गो डाउन. समझ रहे हो? ठीक है, नाइस कैंडल. दिस वन ब्लैक. ओके, ब्लैक मीन्स रेड डेफिनेटली. एंड ये वाला कैंडल, अभी इसमें 3.5 मिनट बचा है, अगर तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे. ठीक है, तो हमें चाहिए इस कैंडल का इन्वर्स थोड़ा, यानी कि ये कैंडल एक बार रिवर्स आ जाए तो एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा फॉर द सेलर्स. दैट्स इट, नथिंग एल्स. देखो, ट्राइंग टू डू दैट अगेन, दिस कैंडल. यस, यू सी दैट. दैट्स वाई ये मार्क करके रखा था. How many liquidity sweep does gold really want? How many? Crazy.
क्रेजी। ग्रेट स्वीप, ठीक है, ग्रेट स्वीप। इट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ हाई राइट नाउ, समझ रहे हो, हाई दे रहा है वो पूरे दिन के लिए, एंड फिर पूरे दिन उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। The only problem is that we do not have any high right now. अभी हाई अलग अलग तरीके से बना रहा है अपने। फिर से ऊपर जा रहा है, अभी फिर से ऊपर जाएगा। ये दो चीज़ों पे फोकस करना, ठीक है। यस ब्रदर, आई रिमेंबर यू, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर। ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये वाली। इसको हम हटा देते क्लटर को। The only thing is that we are not sure about the high, that it can continue going up. The only thing is that I want market to create a high, then I can plan accordingly. But the low is very much this, okay? Anytime market creates a setup, this is my TP. This is my TP, and I'm very sure about it. And the only thing is that it needs to create some sort of setup or some sort of confirmation जहाँ पर it can be like, okay, I know that यहाँ से it can fall. It has to fall, but like from where? That's very important. समझ रहे हो? Because ये जो candle अभी create हो रहा है, this is also like another liquidity sweep to this area. So yeah. हाँ, that's fine, कोई issue नहीं है। अभी तक लोगों को सेल करने के लिए नहीं बोला, दैट इज़ माई, आई कैन टेक माई एस एल, दैट इज़ फाइन। जब लोगों को मैं ट्रेड दूंगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज me not making profit, that is fine, because I do it daily, that's my regular job. I grew this account from 2000, so that I can do it anytime. The only thing is that जब मैं लोगों को ट्रेड देता हूँ, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अच्छे से जो भी सेटअप बनता है तब जाके मैं वो ट्रेड दूँ, समझ रहे हो ना। वो तो कट हो गया कब का वो वाला ट्रेड। Monday 5:21. What time does the market start acting, dude? What time? What was the time? कब करता है? Let me just check once. अच्छा, मतलब 4 बजे से एक्टिंग, 5 बजे आई थिंक क्रेजी होता है, 5:30 बजे, ठीक है, ओके कूल, कोई सीन नहीं, लेट्स डू दिस नाउ। ऑल्सो मैं पूरे सेटअप के साथ नहीं हूँ, जस्ट लाइक अ मैकबुक एंड दैट्स इट, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस, ठीक है, लेट्स रिमूव दिस and let's remove this also. Let's remove this.
क्या बोला था, जब ये क्रिएट करेगा उसके बाद की पोजीशन देखना। 3 सेकंड से रिजेक्ट होना चाहिए, नहीं हुआ, ओके कंटिन्यू गोइंग अप। जस्ट अ सेकंड, आई विल बी राइट बैक, जस्ट सेकंड गाइस। ओके सॉरी। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट जब मार्केट ऊपर जाता है, यू डोंट नो कब तक ऊपर जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यू डोंट नो कब तक ऊपर जाएगा। द ओनली थिंग इज दैट कि यू नीड टू फिगर आउट कि एक सेटअप या एक लेवल क्रिएट हो जहाँ पर हम उसको एक तरीके से प्लान कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो, बिकॉज द प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब गोल्ड में तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, कहीं भी तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू हैव अ प्लान and what is your all time high or this and that, whatever it is. You're getting my point? So that is very important. So right now we don't have any high, it is continuously going up, but just because it is going up, क्या हम इससे के साथ buy कर सकते हैं? नहीं, there is no way, because we do not have any low or any sort of setup in this area. So that is why we cannot continuously like buy or like just because randomly because एक bull चल रहा है, bull run चल रहा है, so we cannot buy or do anything right now. समझ रहे हो? भाई हम scalp trade, भाई हम scalp where, buy sell कहाँ पर buy कर रहे हो, sell कर रहे हो, क्या कर रहे हो, what are you doing exactly? So yeah, this is how the gold is reacting right now. Okay, this is a great sweep. Okay, but like definitely this is gonna be the TP eventually जब setup बनेगा, next target तो यही होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? So yeah, what am I able to see on 1 minute? Whenever market creates this type of setups, हमेशा याद रखना that it's continually going up. ये वाला ठीक है, and then this one too. Okay, never sell from this areas. Okay. 1 minute बाय, ओके क्रेजी ठीक है, बाय नाइस, होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं थोड़ा टाइम के लिए, बट ओनली थिंग इज दैट इट कैन फ्लिप एनी टाइम बिकॉज इट इज़ ऑल टाइम हाई। डूड, ऑल टाइम हाई इज क्रेजी, ऑल टाइम हाई से कभी भी फ्लिप कर सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल, अगर थोड़ा प्रॉफिट अच्छा खासा आ गया है तो निकाल दो फटक से, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो लाइक एबल टू लाइक गेट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस एरिया। फिर से एक नया हाई क्रिएट कर दिया, अब मैं इसको हटाना पड़ेगा, समझ रहे हो। Also 5 minute में I was seeing something 5 minute FG, okay crazy, we do have 5 minute का gap here. I'm getting ठीक है, fine then, if you're getting that then it's crazy. Good bullish structure, ठीक है, no denial, good bullish structure, but the only thing is that it can fall off any fucking time, it can fall off any fucking time. Five minute 1 minute FG, ठीक है, इस लेवल पे आएगा अभी, इस लेवल पे, और फिर उसके बाद रिएक्शन पता चलेगा। Okay. People who are new, फटाफट like कर दो, and yeah, that's it. Crazy, love that.
mm, gonna reject. Like the stream, share with your friends, whoever is watching right now. Early morning, let's go. We are doing it for the first time. Early morning setup, early morning trade. And yep, it does not want to come down, dude. It does not want to come down. It's doing so much drama. This is not our setup, okay? मैं अभी I'm just too lazy to like set up a camera and this and that. इवनिंग में आई थिंक जब तो जो लोग ज्वाइन करोगे, क्या हो रहा है मॉर्निंग में, मॉर्निंग इवनिंग में जब तुम लोग ज्वाइन करोगे, यू विल बी एबल टू सी मी विद फुल फकिंग सेटअप, ठीक है? इट डज नॉट वांट टू कम डाउन, डूड. अभी क्या, ठीक है, चलो एक डबल टॉप तो क्रिएट हो, पता चले कि एक हाई को एटलीस्ट स्वीप किया है, यू नो, सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन, देन विल बी एबल टू गेट. वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन. उसके बिना बाय सेल नहीं कर सकते. दैट्स द ओनली थिंग. आई गो विद प्लान, आई गो विद full fledged system, ठीक है? Having a system is very important because not everybody can have a system, and maintaining the system is very much important, more than that, right? So not losing your system is like one of the important thing. Boom 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 boom, ठीक है, याद रखना. great great structure, great structure, okay? नाइस रिजेक्शन, बॉडी से रिजेक्ट किया है, ठीक है, बॉडी से रिजेक्ट किया है. सो या, are we able to see this right now? Are we able to see this? Are we able to see this? Let's see. Damn, let's fucking go. Another fucking liquidity sweep. Okay, okay. मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा कम दिख रहा होगा. बूम बूम बा बा, चलो. नाइस एरिया. देखो, it did inverse, okay? Exactly, that's what I'm saying. That is what I'm saying, boys. अब ऐसा गिरेगा. ये वाला भी अगर स्वीप कर ले, फिर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमें. एग्जैक्टली, नाउ इट वांट्स टू गो डाउन. बट अनदर थिंग यहाँ पर तुम ध्यान रखना, अगर तुम 5 मिनट पे जाओगे, 5 मिनट पे तुमको ये वाला कैंडल देखने को मिलेगा. बट ये बहुत अर्ली कैंडल है, तुम समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा अर्ली कैंडल. द अर्ली कैंडल में प्रॉब्लम पता है क्या होता है? वो बाद में बैलेंस करता है, रीबैलेंस का थोड़ा चांस मिलता है उसको. इज इट अर्ली कैंडल? येस, इट इज़ अर्ली कैंडल. तुम समझ रहे हो, इट इज़ अर्ली कैंडल. 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई अर्ली कैंडल है जो कि इतना जल्दी, हेलो गुड मॉर्निंग ब्रो, हेलो व्हाट्सअप माय बॉय, एवरीबडी हु इज हियर, फकिंग सब्सक्राइब टू द चैनल, डूड. लाइक आई कम लाइव इवनिंग में, आफ्टरनून में. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग इन द मॉर्निंग. लेट मी सी हाउ इज द वाइब्स and like how we can trade the fucking Asian session, and here we are doing that. 3 मिनट बचा है. ध्यान रखना हमेशा, मार्केट अगर बहुत जल्दी अगर मूवमेंट दे दे तो मोस्टली हो सकता है बाद में उसको वो रीबैलेंस करे, एंड इट माइट यू विल बी सी दैट ईयर ओए ओए आई एम नंबर्स गाय. ओके इट इज फॉलिंग राइट. एज आई टोल्ड यू, इफ इट्स गोना inverse this fair value gap as well, okay? This one, it did fucking not. This one is very important area, right? This fair value gap or whatever, but this was this low was into this gap. So what happened? It did go up from the area. It did go up from this area. Then you might be able to see some good move to the upward. Oh yeah.
Okay, it's reversing. Okay. Now it wants to come down. Haha, crazy as this. I'm a numbers guy. Okay. We took it. Okay, we took it. Okay. We are officially in the trade. The only thing is that you guys only sell if market cross this area. Okay, this is the early trade that I took. It might flip, I don't know, I mean, but if it's gonna go down below this level, then only sell, otherwise don't. Okay. Oh shit. Ah, fuck. Very close to that. Is that a pure manipulation right there? Because there is no way. I don't accept this candle. I don't accept this candle. What is this candle for, dude? It went up, sweep the liquidity, came back. Uh, on the one it has created a gap on 1 minute. Um, fucking swept into that fair value gap, came back. What does it really want, dude? Right? This is a perfect setup. That it has to fall. It has to fall. It has to fucking fall. Right? There is no way it's not gonna fall. Lovely. How I see it, okay? How I see it. It's very important, like how I see the market. How I see it, it's bullish, definitely. We are taking off of some sort of rejection, right? And that's completely fine, right? If it's gonna give us like 1:2, that is also fine. But you see that it does not want to come down right now. Okay, it might come up after taking some other more liquidity. The only thing is that we do not have that type of time, right? So yeah, what are we seeing here? 30 seconds left for this candle. It should not cross that area again. Then if it's gonna cross that area, then the SL is fixed for fucking sure. Okay. Okay. Nice.
Good rejection. What is this, dude? What is this? I mean, okay, we'll talk about it. We'll talk about it. ठीक है? We'll talk about it for sure. But थोड़ा अभी let me come to that zone, safe zone first. Okay? Are we? Holy fucking shit, dude! It's so manipulative. So fucking manipulative. Oh shit! I'm out. 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 Wait, wait, wait. Let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Not looking good. Sell is not looking good right now. Sell is not looking good. Okay, we might be able to find some re-entry here, but the sell is not looking good. You see that? If it wants to go up, it can go up till the point that you'll fucking blow your account. So like, not gonna rush right now. Again, this gap is there. How many support, dude? One support, second support. Too many supports this market is taking right now. The only thing is that this was very nice. This was very nice setup. It did fail, dude. It failed. It failed miserably, honestly. Now it wants to come down. That's crazy. Now it's coming down. Now it's fucking coming down. That's crazy. Now it's gonna come. Wow. That is fucking crazy, dude. It manipulated, dude. It fucking manipulated me. It's gonna break this also. It's gonna break this. It's gonna break this. Break this. It's gonna break so many levels. Okay, it's gonna break so many levels. Okay. We'll try to find an entry. Okay, no stress, no stress. It did fall. Okay, it did fall off of that area, but like just hold on for some time. Okay, we might catch some good ass move here.
Exactly, dude. What is this candle? 1 minute left for this candle, and it's gonna fall after this. 1 minute left. Crazy, brother. Crazy, crazy. I think you should cut now. You should cut now. It's gonna fall now. It might manipulate a little bit and it's gonna fall. 20, 20, 20, 20, 20, 23 seconds. It's pumping, but now you see what will happen with it. Only, bro, only 20 address. Okay, cool, cool, cool. No, no stress. This will sort everything for everyone, okay? This is effigy, a real gap, a very good gap, okay? Check USD, I think it's gonna. Are you talking about this? But you see this, like there is a major liquidity sweep at this area also. So this is the, if it wants to go to that level, it has to come down and take out this liquidity at this point. You're getting my point? It has to take out this liquidity, this major liquidity pool. It cannot continuously go up. Like how many stop loss are there? It has to take out some stop loss, right? It has to take out this stop loss, this stop loss, this stop loss, and this stop loss. There are a lot of stop loss here, so it might not. It might not. It might just fall from here. But the only thing is that we need some sort of confirmation that we do not have right now. Okay, what you're saying might be correct. I'm not saying that. But you need to see that how it is on 1 minute. You see that gap. It is it. Yeah, it might go up, bro. It might go up. Honestly, it is just filling that gap through the wicks and this and that. We don't fall for that. We need body closure. Okay, we need body close like this. We need body like that, and then we'll be like, oh, okay, cool. Then we can go for it. But you see that every just a weeks, okay? We need the body. We need the body to, yeah, exactly. That's what we need. Exactly, that's what I need. What I just told you, that's what I need. Okay, that's what I need, and it's gonna fucking fall from here. But like, only thing is that we need to wait for like this breakout, okay? But also there is like, it's a very fucking strong support. You see that? It's a very strong support. So, like, we're not gonna like get cocky about it, but like, good support. Okay, 20 second, 20, 20, 20, 20. How is it looking here?
See, 5 minute wants to fall. I'm not gonna capping. I'm not gonna cap it. Like, it does want to fall a little bit. You see that? Or you see that, like, there is another possibility here. Okay. You see that this, it has created another FEG. It has to trade into this. If it's gonna inverse this, अगर यहाँ से inverse होता है, then definitely it wants to go up. Again, if it's gonna tap in and come down, then there is a possibility that it might want to go down. But there is a so like strong support here. Okay, the support is very strong. So yeah, you gotta like wait for that also. Exactly, I told you, right? It's gonna fall, dude. But could be gone. Exactly, fucking gone. Told you, right? But yeah, could be a little. But you see that, right? Another thing that you need to focus on, that there is a fucking effigy at this level. Okay. So yeah, so I'm like a little worried about that. Okay, what is happening here? Let's consider the 5 minute one. This is a 5 minute FEG. Check 1 minute. Yep, I see that. But that doesn't mean that it's not gonna like bounce down. Like, the doji cannot decide anything. That's the only thing. Yeah, what I'm saying, like, you know, the doji can't do shit, dude. Dekha? What I said. Just because of doji doesn't mean that it's gonna go up. Checking every minute. You see that? Okay. So one important level. Okay. This is a 15-minute gap that market has created. What is happening here? That this candle has fucking like inverse into that, and the whole body is into that FEG. What we are waiting for right now, if this candle of 15 minute gonna reverse and close above this area, this box, this little box, okay, then it might continue up. Okay. Second scenario, there is this FEG, this 5 minute FEG. Okay, this one. Right now you are able to see that it is rejecting off of that FEG. Okay, it is rejecting off of that FEG. So this was my low, this was my current low. It did sweep out of that low, right? And then it is going up, and yeah, just hold on. We can't say right now. It is rejecting off of that. Yes, exactly. You saw that? So yeah, it does make sense. It does fucking make sense now. 15 मिनट को भी वहाँ से एक करना चाहिए, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए इस लेवल के. समझ रहे हो? तो ट्रेड कब होगा? जब ये 6 मिनट ख़त्म होंगे. हो सकता है दैट वुड बी टू लेट, बट वही है, जब तक कंफर्मेशन नहीं है तुम ट्रेड नहीं ले सकते. ला 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 ला. बूम बाकला. Nice.
ठीक है, ऊपर जाएगा। क्या 15 मिनट होगा? चल ठीक है, 15 मिनट में it did traded into that gap, but like definitely it was inverse. So we are not gonna consider this as a, we are gonna consider this as a tap in. Okay, that means that it wants to go up. Gold wants to go up, guys. Okay, that is the whole analogy or theory behind this candle. Okay, and it does look like this candle gives a very good impression of like, oh, it wants to go down because like a doji at the top, but nah, that doesn't make sense. And 5 minute, if you see that, where's the 5 minute gap? This is the 5 minute gap, right? This one, this little box. You see how smartly it traded into that area and like it reversed from that area. So what does it say? That it does fucking want to take all this. It does fucking want to take all this, dude. Simple as that. Not gonna lie. Also, what is more important? That this one, exactly. As I told you, it wants to go up. It fucking wants to go up. There's a trick here, okay? There's a situation here. It might take, this was a support, it might consider this as a resistance, but it's too late for that. And what is it doing? Is it like, it did trade it into this fair value gap and it does want to continue go up. You see that? Short who with 40 pips. शॉर्ट तो नहीं कर सकते भाई, अभी शॉर्ट तो नहीं कर सकते। ठीक है, देख रहे हैं तुमको, दिख रहा है वो कैंडल कितना अच्छे से उस कैंडल ने जो उसका गैप था उसको फिल किया। नाउ इट्स गोइंग अप। तुम समझ रहे हो कितना अच्छे से वो गया है। आई जस्ट टोल्ड यू इट्स वांट्स टू गो अप। इट वाज सपोज टू दिस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट था उस सपोर्ट पे आके इट वेंट अप। दिस इज द करंट हाई राइट नाउ। So are we gonna buy from here? No. चलो ये okay, still in profit. Crazy. देखो ये अच्छा एरिया है, तुम समझ रहे हो, ये अच्छा एरिया है। किस चीज़ के लिए पता है? बताओ किस चीज़ के लिए? सेल करने के लिए। ओनली इसको ट्रेड करता है तो इसको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, देन ओनली the Tokyo session is crazy, dude. First time I'm trading in like, like early morning, and it's crazy how it moves in the morning. It's fucking crazy. There are a lot of opportunities, a lot of trades, a lot of this, a lot of that. So yeah. But you see that? Do you see that? I said that it has to like come down
and take this in order for it to go down. You see that how smartly it came down and just like took this, tapped into this gap. What does that mean? That means that it does want to go up more. Okay, that means it does want to go up more. Yes, exactly, and it is going more up. This is, यहाँ से तुम क्विकली एक ये कर सकते हो, बट अभी ये वही है कि लाइक you need some patience with it. Like, do you want to make some quick bucks? Let's make some quick bucks. Oh yeah. टीपी यहाँ कर रखेंगे, ये वाला है, इसको अपन पूरा ये कर देंगे, 100 का कर देंगे, ठीक है, नॉट बैड. Quick $100 just because of the all-time high. Okay, not much. ठीक है, इजी, टच कर दे भाई, ख़त्म कर दे. No, how close it is, dude. कितना क्लोज था वो. डबल टॉप, क्रेजी. ले लेगा, खुद से ले ले, मैं तो बोलता हूँ खुद से ले ले, मैं कैंसिल नहीं करूँगा, खुद से चाहिए मुझे. एग्जैक्टली, ले लिया. ओके, चलो. क्रेजी, ठीक है. एटीएम पे आ चुका है, ऑल टाइम हाई पे आ चुका है. एक क्विक ट्रेड लिया था हमने वहाँ पे $100 का, निकाल दिए. बट या वो ऐसी चीज़ है कि मतलब मैं हर 5-5 मिनट में निकाल लूँ, बट वही है कि वो छोटे छोटे ट्रेड्स में मज़ा नहीं आता यार. मतलब देयर इज़ नो फन, देयर इज़ नो फन इन इट. वी वांट समथिंग लॉन्ग. देखो, नाउ दिस एरिया इज इंटरेस्टिंग. अगर तुम अच्छे से देखोगे, अब ये वाला एरिया थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है. भाई नींद आ रही है मुझे. I haven't slept the whole fucking night. Okay, it did took that all time high. Okay, यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन आ जाए. एक बार मुझे ये देखने दो. ये ऊपर जाएगा मतलब वो गिरेगा, राइट. सो या चलो 2 मिनट बचे. 2 मिनट में अगर ये ऑल टाइम हाई के नीचे अगर क्लोज होता है, देन पूरे दिन के लिए हो सकता है नेक्स्ट जो भी अभी थोड़ा ठंडा गिर जाएगा मार्केट, उसके बाद हो सकता है ये पूरा नीचे ट्रेड करे. ठीक है, बट उसके लिए तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज देख इट डज नॉट वांट टू गो डाउन इन अ वे लाइक भाई पूरा ही बुलिश है. तुम समझ रहे हो, तुम चांस ले ही नहीं सकते. पीपल हुआ ये फटाफट लाइक कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड या वी नीड दैट, वी नीड दैट. ठीक है, ऑन 1 मिनट इज इट गोना लाइक क्लोज बिलो दैट एरिया? नोप, it does want to go up.
I'm telling you all. परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था यहाँ से, जब मैंने वहाँ पे बोला था दैट इट्स गोना कम टू दिस लेवल एंड देन सी गुड रिजेक्शन, बहुत बढ़िया रिजेक्शन आ रहा है। 5 मिनट पे ऐसा रिजेक्शन आ सकता है, देन दैट्स क्रेजी। ठीक है, गुड पोजीशन। इसके नीचे आएगा तो सेल कर सकता है। नहीं तो डायरेक्टली दिस और दिस, समझ रहे हो? यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द पॉसिबिलिटीज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। वेट करो थोड़ा, तब जाके तुम्हें कुछ कंफर्मेशन मिलेगा। अभी तो फिलहाल बस इट जस्ट लाइक रीलिंग डाउन, बट इट जस्ट लाइक ट्रिगरिंग मी सो मच, नॉट गिविंग एनीथिंग एंड ऑल, इट्स जस्ट बुलशिट। ओके, जस्ट फकिंग बुलशिट। कितना टाइम हुआ है स्ट्रीम को? ओ 1 आवर, दैट्स क्रेजी। थोड़ा रिजेक्शन आएगा अभी यहाँ पे, थोड़ा ऊपर जाके। अगर नहीं आए तो देन इट डजंट वांट टू कम डाउन, समझ रहे हो? जो लेवल्स चाहिए वो लेवल्स मिलने चाहिए, अदरवाइज जस्ट बिकॉज इट्स गोइंग अप तो हम उसके साथ ट्रेड नहीं ले सकते, जस्ट बिकॉज इट्स गोइंग डाउन हम उसके साथ ट्रेड नहीं ले सकते। तुम समझ रहे हो?
यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशन, यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ लेवल, तब जाके हम कुछ भी बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। गुड। नो 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 नो, समझो, इट्स क्रॉसिंग एवरी लेवल डूड, एवरी पॉसिबल लेवल। No, it wants to go up. चलो, gold is gonna go up for some time, okay. जैसे ही कोई सेटअप बनता है, then I'm gonna post on my community channel that like this is the setup that we have and so you guys can buy or sell accordingly, ठीक है। So till that time I'll leave, now I need to sleep. I'll come live around 9 or 10, ठीक है, नहीं 11 बजे आ जाऊँगा, एंड रात में तो लाइव होता ही है as people know. Then तब तक के लिए see you, and subscribe to the channel, people who are new here, and we daily stream, so yeah, you'll be able to see me live trading daily, okay। चलो अभी के लिए bye bye, good night, see you, शब्बा खैर।